बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमने स्मार्ट सीरीज बुक के MCQ स्टार्ट किए थे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सारे टेस्टों में इससे MCQs आते हैं। MCQ नंबर 761, नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ यूजुअली ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन। तो हमारे पास इसका जवाब ऑप्शन डी है। स्लिप रिंग जो हमारे पास है स्क्विरल केज रोटर में नहीं होता। देयर इज़ नो स्लिप रिंग इन स्क्विरल केज रोटर। MCQ number 762. What is the dielectric strength of porcelain kW per inch? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारे पास एक ये मटेरियल इसका क्या होता है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 203 किलोवाट और ऑप्शन डी 450 किलोवाट। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है 203 किलोवोल्ट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है what is the dielectric strength of glass kW per inch? ऑप्शन है 355 किलोवोल्ट, ऑप्शन बी 500 किलोवोल्ट, ऑप्शन सी 600 किलोवोल्ट, ऑप्शन डी 750 किलोवोल्ट। इसका आंसर इज ऑप्शन है 355 किलोवोल्ट। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस इज ऑप्शन है सेम, ऑप्शन बी डबल, ऑप्शन सी मोर देन डबल, ऑप्शन बी नन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। ऑप्शन बी द कॉस्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डबल। तो ओवरहेड और अंडरग्राउंड का तकरीबन मोर देन डबल से ज़्यादा होता है अगर हम केबल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की बजाय अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन केबल को बेचाए तो हमारे पास उसका तकरीबन डबल से ज़्यादा है। MCQ नंबर 765 for percentage voltage drop expression which of the following voltage is used? Option A sending end voltage, option B receiving end voltage, option C system nominal voltage, option D any of above। आंसर इज ऑप्शन सी सिस्टम नॉमिनल वोल्टेज से। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है विच गैस इज यूज्ड इन गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ऑप्शन डी एयर। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है sulfur hexafluoride gas is used in gas insulated substation। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है the speed of squirrel cage induction motor can be controlled by all of the following except। तो स्क्विरल केज ऑफ रोटर हमारे पास कंट्रोल होता है इन सारे तरीक़ों से, लेकिन एक तरीके है जिससे कंट्रोल नहीं होता। ऑप्शन है चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन सी चेंजिंग वाइंडिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग सप्लाई वोल्टेज। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है चेंजिंग वाइंडिंग वोल्टेज रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास इंडक्शन स्क्विरल केज रोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं होता। MCQ नंबर 768 हमारे पास इन केस ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर द प्लगिंग मीन्स। तो 3-phase इंडक्शन मोटर में प्लगिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए पुलिंग द मोटर डायरेक्टली ऑन लाइन विदाउट स्टार्टर, ऑप्शन बी लॉकिंग ऑफ रोटर ड्यू टू हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी starting the motor on load which is more than the rated voltage load, option D
interchanging two supply phase for quick stopping on the state हमारे पास ऑप्शन डी है. In case of three-phase induction motor, the plugging means interchanging two supply phases for quick stopping. Next MCQs हमारे पास है 769. The speed of an alternator is changed from 300 rpm from 3000 rpm to 1500 rpm. The generated EMF phase will become option A 1/4, option B half, option C double, option B D unchanged. इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी हाफ है. तो आरपीएम आपको देख ले 3000 से 500 तक कम हो गए तो हमारे पास तकरीबन आधा आरपीएम कम हो गया स्पीड. तो ईएमएफ ही हमारे पास हाफ ही कम होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 770. Alternators used in aircraft system usually have a frequency of 50 Hz, option A, option B 60 Hz, 25 Hz, 400 Hz. The answer is 400 Hz. एयरक्राफ्ट के लिए एनर्जी ज़्यादा हो चाहिए तो हमारे पास 400 एयरक्राफ्ट ये 400 Hz हमारे पास फ्रिक्वेंसी होता है. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है 771. Single phase induction motor torque at the instant of starting is more than the rated torque, equal to the rated torque, 0 or less than the rated torque. Answer is 0. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो है हमारे पास स्टार्टिंग में 0 होता है तो इसके लिए हम एक वाइंडिंग लगाते हैं जिसकी वजह से ये टॉर्क ज़्यादा पैदा करते हैं. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है विच मोटर हैज़ द हाईएस्ट पावर फैक्टर. कैपेसिटर पावर फैक्टर हमारे पास किस मोटर का ज़्यादा होता है. कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, रिपल्जन मोटर. द आंसर इज ऑप्शन बी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर is highest power factor, has a highest power factor. Next MCQs हमारे पास है 773. The electric motor is used in portable drill is option A capacitor run motor, option B hysteresis motor, option C universal motor, option D repulsion motor. The answer is option C universal motor. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 774. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ऑप्शन ए आर्मेचर वाइंडिंग, ऑप्शन बी फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. द आंसर इज सी बोथ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग. अगर हम चेंज करते हैं तो यूनिवर्सल मोटर का डायरेक्शन चेंज होगा. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 775. विच सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्शन. ऑप्शन ए कोल्ड स्लरी, ऑप्शन बी क्लोज्ड लूप, ऑप्शन बी ओपन लूप, ऑप्शन डी फीड फॉरवर्ड. द आंसर इज क्लोज्ड लूप. हमारे पास इस्तेमाल मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 776. 500 माइक्रो एम्पेयर and 2 kilo ohm voltmeter will show half scale deflection with voltage of option A 0.05 volt, option B 0.01 volt, option C 0.1, option D 1. तो ये आप केवल V = वाले फार्मूले इस्तेमाल करें उससे वोल्टेज मालूम करें तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बी 0.1 इससे आंसर आएगा सही है. नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द मैग्नेटिक शील्ड और स्क्रीन यूज टू प्रोटेक्ट delicate instrument should be made of which of the following material. Option A
प्लास्टिक, ऑप्शन बी सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन बी है सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है फॉर जनरेटिंग 1 मेगाहर्ट्ज फॉलोइंग ऑसिलेटर कुड बी यूज्ड। ऑप्शन बी कॉल पिट्स, ऑप्शन बी वेन ब्रिज, ऑप्शन बी RC फेज शिफ्ट, ऑप्शन डी हर्टले। The answer is cold pits generating oscillator could be used for generating 1 megahertz। 1 megahertz के लिए हम कॉपलेट ऑसिलेटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है dielectric strength in case of mica can be expected to be more than option A 500 kW per millimeter of 1500 kW per millimeter, 2500 kW per millimeter, option B, option D 3500 kW per millimeter। The answer is option A, dielectric strength in case of mica can be expected to be more than 500 kW per millimeter। सही है ऑप्शन है। MCQ नंबर 780 हमारे पास है which impurity is present in liquid dielectric which straighten the dielectric effect। हमारे पास कौन सा इम्प्योरिटी मटेरियल इस्तेमाल होता है जो डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कुव्वत या ताकत ज़्यादा करता है। ऑप्शन ए डस्ट, ऑप्शन बी डिजॉल्व गैसेस, ऑप्शन सी मॉइस्चर, ऑप्शन डी आयोनिक इम्प्योरिटीज़। इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन सी है मॉइस्चर हमारे पास इसमें मौजूद होता है। तो ये हमारे पास 780 MCQs कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दुआ में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलाम।